सर 2011 में रिटायर्ड किया P1 से। अनावश्यक रूप से मेरी 10% ग्रेचुटी और पेंशन रोक ली। 10 years, more than 10 years. Who will pay the interest of this 10 year, of this 10% amount? कितने कम्युनिकेशन इनकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप इनका क्यों विथहेल्ड किया? आपने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। And who is responsible for that? इंटरेस्ट भी दीजिए इसका और कॉस्ट भी लगेगी पिटीशन। बिना प्रेजेंस के नहीं होता काम। क्या हुआ इसमें? इसी में प्रेजेंस थी। 10% पेंशन और 10% ग्रेचुटी। हाँ। वो रुकी हुई थी। क्यों? इनिशियल स्टेज पे इनकी डी चालू हुई थी, बट वो रिटायरमेंट के 4-5 साल पहले की थी, तो फिर वो आगे बढ़ाई नहीं और खत्म कर दी। डी कब खत्म की? मई 2023। रिटायर कब हुए? भाई सर 2011 में रिटायर्ड किया P1 से। 2011 में? जी हाँ। और अनावश्यक रूप से मेरी 10% ग्रेचुटी और पेंशन रोक ली। और जब पिटीशन लगाई उसके बाद में कोर्ट ने पर्सनल अपीयरेंस के लिए ऑर्डर किया, तब भी इन्होंने जवाब पेश नहीं किया। हाँ। और लास्ट डेट पे जब ऑर्डर किया तो इन्होंने रिप्लाई पेश किया सर, ये कहते हुए कि हमने 2012 में एक चार्जशीट इशू की थी, उसको अब निरस्त करते हम। जबकि मैंने स्पेसिफिक लिखा पिटीशन में कि मुझे कभी चार्जशीट सर्व नहीं हुई, कभी चार्जशीट इशू नहीं हुई और ना मेरे खिलाफ कोई लोकायुक्त के केस के संबंध में कभी जानकारी थी। और यही नहीं सर, डायरेक्टरेट कंटिन्यूअसली इनको पत्र लिख रहा गवर्नमेंट को कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ये नहीं है और इनको जो है इनकी जो पूरी पेंशन चालू की जाए। एनेक्सर P6 का P5 का पत्र देखिए सर। Yes, Mr. Secretary. How you will justify? Sir, from 2012 to 2020, various communications were done to the concerned person, and none of them are on record. Even copy of charge sheet is not available. 12 साल आप 10% withheld करके रखे हैं। So sir, 2013 to 2020 आरोप पत्र उनको बार-बार भेजे। हाँ, where is that charge sheet? That is, you have not filed along with charge sheet should have. No, there is no reply. Sir, in July, May 2023, the decision has been taken by the department, and the charge sheet has been quashed, and pension also has been granted to the concerned. So not quashed, you have withdrawn the charge. Yes. Initial stage पे। And sir, 10 years, more than 10 years. So sir, who will pay the interest of this 10 year, of this 10% amount? Sir, on 13th of December 2022, sir, जब ये खुद डिपार्टमेंट के पास जब आए सर, तो मेरे मतलब डिपार्टमेंट के नॉलेज में ये केस आया, उसको फास्ट ट्रैक करते हुए सर हमने मई में इनका केस समाप्त करते हुए जुलाई में इनको पेंशन भी प्रोवाइड की। Who is responsible for all this? Sir, all those years. Why is required to approach? Why this was withheld by an extra P1? जी सर, और P8 में ये जो कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि 16 से डिपार्टमेंट लिख रहा है कि इनको गवर्नमेंट को आप पेमेंट दे, इनका खुद का लेटर है सर। ये कह रहे हैं 22 में आए, वही गलत है सर। Sir, 2013, 2016, 17 and even in 23 we have communicated, और जो चार्जशीट जारी की गई थी सर उसका रिप्लाई नहीं मिला था, और इस बीच में इनका कोई कम्युनिकेशन सर डिपार्टमेंट से नहीं रहा था। ये जो ऑन रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट के पास फाइल है उसमें है। You prepared the charge sheet, whether it was issued or not, nothing is on record. That is admittedly after retirement, 1 year of retirement. Do you have a copy of that charge sheet in your service record? Sir, copy I am not carrying right now, sir. The charge. Why you are not carrying? You have said so in written on affidavit. There was a charge sheet. Where is that charge sheet? आपने उसका cancellation का document बना लिया है, but where is the charge sheet? So charge sheet, I have gone through the charge sheet, sir. I am not carrying right now. Why you have not filed along with the return? Who is going to believe that this charge sheet was there in 2012? Sir, if required, I can file a. No, I am not suggesting this. It's your duty to file along with the reply. When you have taken a plea that your charge sheet was pending against him, yes, when it was served, nothing is on record. Serve कब की आपने charge sheet?
None of these communications were replied by your office. ये निशा P2, P3, ये कितने communication इनकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप इनका क्यों withheld किया? आपने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। सर मैंने जो पुरानी फाइल देखी है सर, उसमें in reply to those communication, it was always communicated that the reply of Aropad has not been filed by the concerned party. That is what I have seen it on record. And after that, with on the basis of the representation submitted by the party, we have decided and given all the benefits. P8 देखिए 2016 में आपको लेटर लिखा गया था ज्वाइंट डायरेक्टर की तरफ से, इसका क्या रिप्लाई है? इनको आरटीआई में मिला है। लेटर के रिप्लाई में आपने लिखा इनके खिलाफ चार्जशीट पेंडिंग। Yes sir, in these letters it has not come to the notice, but sir जो departmental file I have gone through sir, उसमें वो चीज है सर। ये भी कौन सा पैसा इनको दिया आपने भी? ये सर इनका पेंशन, ग्रेचुइटी और सारे जो 7 लाख रुपए। तो पेंशन की थी, ग्रेचुइटी 9 लाख रुपए। लीव इनकेशमेंट और यस वैसा जी। राइट नो उनका जो ड्यूज था वो तो क्लियर कर दी, और जो यू हैव ऑब्लाइज्ड हिम नहीं अभी राइट एंड ऑब्लाइज्ड द कोर्ट आल्सो। डिले का पार्ट नॉट क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट पे डिले हुआ, दैट वाज हिज राइट व्हिच यू हैव विथहेल्ड सिंस लास्ट 10 years। डिले Huh? डिले तो Who will pay the interest? And who is responsible for that? Why the state should pay? Let the officer who is responsible should pay. Charge sheet is not on record. There is no communication by. And किसने withheld किया आपका 10%? गवर्नमेंट P1 से। जी सर। ये आप ही के डिप्टी डायरेक्टर। यस, ये कमिश्नर है, सो नगरीय प्रशासन के उन्हीं के ऑफिस के डेवलपमेंट का, और ये भी कंटिन्यू लिख रहे हैं कि इनको पैसे दिया जावे, इनके खिलाफ कोई चार्जशीट भी नहीं है और कोई केस भी नहीं है, और आप वो कर भी नहीं सकते कार्रवाई 16 से। और आप बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन मैंने 2014 में P3 का लेटर लिखा, सब लेटर कंटिन्यू लिखा है सर ये, और इनका लेटर 16 का फिर मैंने P3 सर, फिर इनका रिप्लाई आया P4 का सर। पैसा मिल गया आपको भी? हाँ, अभी जस्ट बताया, जब मैंने इसके बाद पूछा तो कि हाँ पैसा मिल गया सर। इंटरेस्ट भी दीजिए इसका, और कॉस्ट भी लगेगी पिटीशन। लिखिए, पिटीशनर हैज फाइल्ड दिस प्रेजेंट पिटीशन being agreed by the action of the respondent, whereby they have withheld that 10% of gratuity and pension. Quite a letter order dated. P1 की क्या डेट है भाई? 29/12/2011. अच्छा, 29/12। The petitioner retired as superintendent engineer on 30/9/2011 after attaining the age of superannuation. Right. Order dated 29/12/11. 90% pension, provisional pension was fixed, and 90% of gratuity was sanctioned. Thereafter, he made continuous representation for release of remaining 10% amount of gratuity, but none of the representations were replied. Even the Joint Director, Urban Administration and Development, wrote a letter to the Deputy Secretary on 22/6/2016 that no department inquiry or criminal case is pending against him. Therefore, the pension is liable to be decided finally. Even the said letter has not been replied. Therefore, the petitioner approached this court by way of writ petition. While order dated 23/1/23, notices were issued, but reply was not filed. Therefore, this court had no option but to
all the first Deputy Secretary, Urban Administration to for appearance before this court. Wide order dated 22/12/20. Today, Shri, आपका नाम? Harshal Pancholi. Harshal Pancholi, Deputy Secretary, Yes, sir. Urban Administration is present in person. Today, reply has also been filed contending that a charge sheet dated 19/4/2012 was issued to the petitioner and which remained pending without any progress. And now the wide order dated 15 May 2023, the said charge sheet has been cancelled because the alleged incident took place in the year 2004. That is prior to the 4 years from the date of retirement. Thereafter, now the revised pension papers were prepared, and now amount of rupees 856,015.71 has been credited in the account of the petitioner. Therefore, the relief claimed by the petitioner has been granted by the respondent. In this case, the petitioner retired on so and so date, and white annexure P1 is 10% gratuity and pension were withheld. Vivek Agarwal submitted the petitioner has never been served any charge sheet as claimed by the respondent. The respondent, and along with the return, has not filed any copy of the charge sheet. Even none of the notice representations sent by the petitioner and the letter written by Joint Director there is a reference of any pendency of charge sheet. No reply has been given to the petitioner or to the Joint Director justifying the withholding of gratuity and pension. Therefore, there is totally inaction on part of the respondent, and illegally the amount gratuity and pension were withheld by the respondent. The petitioner, although has been paid 10% amount of gratuity and pension, but he is entitled for interest at the rate of 6% from the rate of annexure P1 till the date of payment. And over and above, the petitioner is also entitled for cost of rupees 20,000. The interest and cost shall be paid by the state government, but with the liberty to recover from a person, officer or the employee responsible for withholding. टाइम 2-3 महीने क्या 3 मिलता महीने क्या आपको पैसा? पेमेंट करने बैंक स्टेटमेंट लगाया है। नहीं जो अपना आदेश किया इसका हाँ, इंटरेस्ट का एक 42,000 की रिकवरी वो भी नहीं करी हमने। 5 से 42,000 की रिकवरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? वो 2004 की थी तो वो भी नहीं कर सकते, इन खुद ने लिख के दिया, और वो भी मैंने कहा गलत है, ये मैंने पिटीशन में लिखा है सर। दे हैव नॉट फाइल एनी रिप्लाई टू दैट। वो भी उनसे रिकवर करी जिनकी गलती। बिना प्रेजेंस के नहीं होता काम। These benefits were given before the appearance before this court, sir. The moment the petitioner approached, we were aware of the case and we decided as you should have come here to file a reply. Sir, why reply was not filed? Sir, unfortunately, OIC didn't do that, sir. We will take necessary action.